Namaskar. Hello, how are you? Standard 8 English medium student, subject maths, exercise 3.1, chapter number 3, understanding quadrilateral. Last time we learned about question 1 to 5. Now we knew question number 6. Okay. मैं सुहास पटेल आप सबका मैथ्स में स्वागत करता हूँ. ओके, नाउ स्टार्ट. फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन. फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. इट मीन्स यहाँ फिगर दी है, फिगर के ऊपर से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. स्टार्ट. चलो फर्स्ट ए, योर फिगर इज गिवन दिस टाइप. Here 30, 50, 130, 120 x. Okay. Here we know that interior angle of quadrilateral sum is 360. Now we name here A, B, C, D. Angle A plus B plus C plus D is equal to 360. Okay, now put the value 50, 130, 120 x is equal to 360. First, all addition 0, 0, 0. Okay. 3 plus 2, 5. 3 plus 2, 5. 5 plus 5, 10. 0, 1 carry. Okay. 1, 2, 3. 300 is plus x is equal to 360. Okay, first addition without x. Now open these terms going this side. X is equal to 360 minus 300. X is equal to 60. Okay, now this is the first answer of first figure. Now we do the second figure. B, okay. Now here how many sides first? 1, 2, 3, 4. 4 sides. It means sum of all angle be 360. Okay? 4 sides. So name this A, B, C, D. Here 90. So this also 90. Why? Because linear pair. Linear pair means T shape. T से बनता है तो दोनों का एडिशन 180 होता है. तो हम क्या करेंगे? दिस इज द सिंबल ऑफ 90. 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा. दिस ऑल्सो 90. ओके, राइट डाउन एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360. ओके, A इज इक्वल टू 17, B x, C 90, D 60 is equal to 360. Okay. So x plus addition 0, 0, 0. 6 plus 9, 15. 15 plus 7, 22 is equal to 360.
Okay, so x is equal to 360 minus 220. So x is equal to 0, 6 minus 2, 4, 3 minus 1, 2. 3 minus 2, so 1, 140. Okay, this is the value of x. Question number B. Now question number C, first you write down here. First figure, question C. Here, this type of figure. Here x, here also x. This 30, $17, 60. Okay, 30, x, 70, 60. Okay. We want to find the x value. So first, this interior angle A, B, C, D, E. Suppose this and this interior angle is not given, so we want to find interior angle this. Okay. Suppose name here y. Okay. Once this is z. Suppose we taken. So what happened? This angle y plus 70 is equal to 180. Why? Because linear pair. Okay. So y is equal to 180 minus 17. So 110. This is 110 y. Same to same here. Both are linear pairs. So angle z plus 60 is equal to 180 because T shape बनता है तो उसको linear pair बोलते हैं. Okay, linear pair. So z is equal to 180 minus 60 is equal to 120. Okay. Now we want to find here number of side. How many here? 1, 2, 3, 4, 5. N is equal to 5. Sum of the interior angle formula here. N minus 2 into 180. लास्ट टाइम वी लर्न, ये इसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बराबर. यही फिर से आ रहा है बिकॉज पॉलीगॉन इज गिवन हियर. n is equal to 5 minus 2 into 180. 5 minus 2, 3 into 180. So 5, 18, 3 are 54. ओके. इस तरीके से अपने को मालूम पड़ सकता है कि ये इंटीरियर एंगल ऑफ एडिशन B 180 होता है. ओके. दूसरा देखते हैं कि ये रिमेनिंग पार्ट क्या है, वो देख लेते हैं. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस. चलो. Okay, sum of all 5 angle addition B here 540. Okay, so angle A plus B plus C plus D plus E is equal to 540. वैल्यू पुट अप करेंगे. A की वैल्यू 30. ओके. B वैल्यू x, C वैल्यू 110, D वैल्यू 120, E वैल्यू x इज इक्वल टू 540. जो रह गया उसका एडिशन 30, 110, 120,
0.23. 0, 3 plus 3, 6, 2. 2x plus 260 is equal to 540. 1, 2. 2x और ये बाकी का एडिशन. 2x is equal to 540 minus 260. 2x is equal to 0. 14 minus 6, so 8. 4 minus 2, 2. 280 by 2. 14 to the 28. X is equal to 140. This is the answer of figure third. इस फिगर का आंसर है. ओके, अब फिफ्थ फिगर उसके बाद चेक करते हैं. फिफ्थ फिगर first draw the figure of the डी की फिगर क्या है चेक कर लेते हैं पहले. 1, 2, 3, 4, 5 सेम टू सेम है. रेगुलर पॉलीगॉन A, B, C, D, E. All value x. X is given here. All is okay. Regular polygons, so all sides be same. Now we want to find the value of polygons. So what happened? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E is 540. हाँ, 540 क्योंकि हमने क्वेश्चन सी में देखा कि अपनी फॉर्मूला है n-2 × 180. उसमें वैल्यू रखेंगे तो 540 आएगा, बराबर. इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया है. अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं. x plus x plus x plus x plus x is equal to 540 because all are x. So 5x is equal to 540. x is equal to 540 by 5. 5 से कट करेंगे. 5 1 जा 5. 4 डिवाइडेशन नहीं होगा तो 0 लगाएंगे. 5 8 जा 40. So 108. This is the value of x. Okay, this is question 6 be finished. Now question 7 we start now. Here also given the figure. Question 7 A. Okay, this is a triangle shape. This type of figure is given. Okay, here is not given. Here also not given. Okay, this type. Upper side this is not given. Okay, here x, this 90, this z, this 30, y. Okay, this is given. Find x plus y plus z. यानी कि आपको तीनों का एडिशन ढूंढना है. ओके, फर्स्ट दिस इज द लीनियर पेयर तो दोनों का एडिशन 180 होगा. x plus 90 is equal to 180. y linear pair. x is equal to 180 minus 90. So क्या आएगा 90. This x value. Okay, same to same this also linear pair. So z plus 30 is equal to 180. Z is equal to 180 minus 30. Z is equal to 150.
Okay, third one, because linear pair. Okay, this also y is not given, so how to find y? Here in the triangle, sum of the interior angle is equal to exterior angle, यानी ये दोनों का एडिशन ये होता है. क्यों? ये इंटीरियर है और एक्सटीरियर है, तो क्या होगा 90 प्लस 30 इज इक्वल टू y. एक्सटीरियर angles. Okay, so y 120. Okay, now we want to find value of x, y and z. So x plus y plus z. X 90, y 120, z 150. 0 0 0. 9 plus 2 11, 11 plus 5 16, 1 carry 1 2 3 360. Okay, this is the answer of third figure. Question 7a. Now question 7b. First we draw the figure. First draw the figure, after we start solution. Okay, which type of the figure is given here? Question 7b. Here this type of the figure is given here. This is z, this 60 is given here. Okay, here 10, here 10 is given, here not given, this 120. Okay, this x 80 and y, this given. Okay, so we want to find value of x plus y plus z plus w. Here w is given here, this w given. Okay, so what we find here, all the addition. How to find all the addition here? First, okay, this value, this is the t shape, so z plus 60 is equal to 180 by linear pair. So z is equal to 180 minus 60, 120. This 120 is find out. Okay, this w is not given. Okay, but this also linear pair. 120 plus x is equal to 180, because this is the t shape, this also linear pair. Okay, so x is equal to 180 minus 120, x is equal to 60. This value 60. Okay, now we want to find here z, x, y. This also t shape, so both addition 180, y linear pair. Y is equal to 180 minus 80, y is equal to 100. Okay, it's 100. Okay, now here z, x, y, all. W is not given, so why? How to find w? Because here exterior angle. Okay, all are the exterior angle. So exterior angle addition is here 360. Okay, so find out the w. X plus y
and W is how to find. So addition all. So we getting the W. Okay. Or second method we want to find here. Okay, addition of these three, alpha, beta or gamma. Okay, and find out the value. But addition we first round out the W. Okay, 180. Okay, so opposite angle be same. Okay, so 80. So 80 minus 180, so 100. W is also 100. Okay, so you want to find the W easily. ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, और डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना हो तो ये कर सकते हैं. ये दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल एंड अपोजिट एंगल बी वन. सपोज हियर W नेम दे देते हैं P and Q. ओके, सो अपोजिट एंगल एडिशन 180. सो P plus Q is equal to 180. And suppose all are same here, so you are given, yes, all are the same, yes, so opposite angle be 80 same. Okay, because quadrilateral. So P is equal to Q, so 80, easy. So it means W is equal to linear pair. Okay, so 180 minus 80, so 100, and x plus y plus z plus w. X value here 60, y value 100, and z value 120, w 100. एडिशन करते हैं 0 0 0 0, 6 plus 2, here 120 and 36, 360. Okay, this type we want to find value of, okay, 60, 80 and 80. Okay, so here also suppose subtract, so we getting 80. Okay, so here 100, this also 100 minus, so this is linear pair, so 80. So easily here W value of exterior angle, so 100 minus 80, so we get 100. Okay, but this is a linear pair. Suppose you have P and Q, so W is equal to 180 minus 100, so we getting 80. Okay, so we getting the here also 80, so value of 360. This type you want to find the value of x. Again I repeat, here this linear pair, so addition 180 minus, this is not given, this also linear pair, so 180 में से 120 subtract 60 आएगा. ये भी linear pair है, T shape है, तो 180 में से 80 करेंगे 100 आएगा. Here not given, तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा 180, इसलिए 180 माइनस 80 करेंगे 100 आ जाएगा. फिर ये लीनियर पेयर है ये, तो यहाँ 180 माइनस 100 से 80 आएगा. ओके, इस तरीके से हम 80 आएगा. और सम ऑफ दिस 4 एंगल तो 360. इस तरीके से हम पूरा सम कर सकते हैं. ओके, सो डू प्रॉपरली विद द फिगर एंड दिस एक्सरसाइज 3.1 be finished. Okay, bye.